मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। बिकॉज स्टूडियो ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक है। देयर इज नो स्पेस फॉर एनीथिंग एल्स। मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ही घमासान लड़ाई हुई है। जब तक मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, मेरी आवाज का लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। यूपी में रहकर आप नेशनल पास टाइम का हिस्सा ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? सो वंस यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी, डोंट लेट एनीबडी टेल यू अदरवाइज। काफी स्ट्रेस लगता है मुझे कभी कभी कि वो आज जो काम कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते, उनके माइंड में वो पैशन कुछ और करने का था। सो यू मीन टू से कि शायद वो दिन आएगा कि जब पेरेंट्स बोलेंगे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, नहीं मेरा बेटा आरजे बनेगा। ऐसा टाइम अब आ गया है कि लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपस में बात क्या करनी है। जहाँ पे सब लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहां पे आपके और हमारे जैसे लोगों की सोच शुरू होती है। फिर कहीं ना कहीं रेडियो हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा बना ही रहेगा। Hello and welcome. Let me ask you a question. Have you ever heard anyone, any RJ on radio? Have you ever thought who are those people, faces behind those people? And most importantly, is it actually a glamorous profession? What are they doing in their personal life? What is their background? So to answer all those questions, today we have RJ Simran Kohli. Simran, welcome to our show. Hi, Varun. It's a pleasure to be here with you because I've been following you very, very closely, and I simply love the work that you do and the heights that you have touched with that kind of work. Amazing. Thank you. I appreciate it. Before we get into your journey, your career, Simran, let me first ask a question. So I was actually looking forward to ask this question to you, and since we are on our show today. So whenever you stepped into your radio station and you had a very bad mood was off, have you ever thought कि आज तो mood off है, आज RJ सिमरन कुछ कर नहीं पाएगी because my audience might not be able to connect with me. So mood को cheer up आपने कैसे किया और audience को कैसे कराया? ये ये बहुत ही बेसिक आंसर है इसका, वरुण। इसमें मुझे ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा होगा, देयर इज अ रिसर्च व्हिच हैज शोन कि अगर गाय के आसपास आप म्यूजिक चलाएंगे तो वो दूध ज्यादा देने लगेंगी, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। कहने का मतलब ये हुआ दैट म्यूजिक हैज दैट इम्पैक्ट ऑन यू। तो सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी आरजे होगा, अगर वो स्टूडियो में जैसे ही घुसेगा, बिकॉज स्टूडियो ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक है, देयर इज नो स्पेस फॉर एनीथिंग एल्स। सो द मिनट यू स्टार्ट लिसनिंग टू दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, इट कंप्लीटली अपलिफ्ट्स यू। यू आर इन एन एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब अगर आप वो चीज कर रहे हैं जो आपको बेहद पसंद है, या कोई भी जब म्यूजिक सुनता है दैट यू लाइक, it transports you. That's the purpose of music, which is what happens to us. So irrespective of what we are feeling, what we are going through, like मेरी आवाज से या मेरे बात करने के तरीके से क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि अभी 5 मिनट पहले मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ही घमासान लड़ाई हुई है? And there is no music here. So okay. So music is in the ears then now, right? Exactly. Music is in the voice. I love your voice. I love the way you are conducting this interview. So it has completely transported me from that to this. So I'm here in front of you, enjoying it more than maybe you are. Wonderful. So मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। आरजे सिमरन कोहली की आवाज उसकी पहचान है। बट थोड़ा जर्नी कैसे रही आपकी? आई एम श्योर आप जब स्कूलिंग में या कॉलेज में कहीं आप जब पढ़ रही होंगी तो आरजे बनना तो शायद कभी एज अ करियर नहीं सोचा होगा, या आपने ग्लैमर था जिसने अट्रैक्ट किया आपको? नहीं वरुण, किसी भी चीज ने अट्रैक्ट नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट हो गया। बल्कि जब तक मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, मेरी आवाज का लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। वो और बात है कि आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट एंड आई वाज heading the dramatics and literary clubs and everything like that. I used to win all the debates. लेकिन हाँ, ये गलत फहमी कभी नहीं थी कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है। बल्कि मेरी जो दोस्तें हैं वो मुझसे कहा करती थी कि बॉयफ्रेंड से अगर पीछा छुड़ाना है तो मेरे पापा बन के बात कर लो, भाई बन के बात कर लो, बिकॉज बहुत भारी आवाज थी मेरी। तो रेडियो तो मैंने कभी, मतलब नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। देन आई केम टू दिल्ली टू डू माई MA मास कम्युनिकेशन,
and radio happened by default. Oh, by the way, let me also tell you that before mass communication I had cleared my IAS ka prelims because my father was an IAS officer. और यूपी में रहकर आप नेशनल पास टाइम का हिस्सा ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? But can you imagine me as an IAS officer? I can't. But let me take this opportunity to thank all the IAS community and all the people from UP for their immense contribution. Yes. So that is when I got through mass communication, MCRC, and I decided to do this. Radio happened by default. और बस फिर उसके बाद होता चला गया. रेडियो की लर्निंग्स क्या आपकी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि रेडियो में करियर कैसे, वो की लर्निंग्स नहीं पूछ रहा हूँ. सो आपका करियर रेडियो की तरफ बढ़ा, वो की लर्निंग्स आपको हाउ डिड दैट शेप अप यू एज अ ह्यूमन बीइंग? Okay, it has made me believe things that a lot of the people don't believe where I'm concerned. और पता हम लोगों की as human beings problem ये है कि we need for verification, we need support, that need to be accepted for people to say हाँ ये सही है, तुम कर सकते हो. उसकी जरूरत नहीं है. अब मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि so much so कि काफी गलतियां भी की हैं, लेकिन रेडियो has made me realize that you can do whatever you want to do. मैं with this voice, if I can be a radio jockey, जिसको लोग फोन करके कहते हैं हमें आपकी आवाज पसंद है, तो अभी भी मुझे लगता है I'm an imposter when people say I like your voice. But then yeah, that's who I am. That's what I decided to be. So once you decide what you want to be, don't let anybody tell you otherwise. That has been my key learning. That's a wonderful statement, Simran. I am a chartered accountant, and whenever I sit with my fellow chartered accountants, हम लोगों को कभी-कभी एक लाइफ में कुछ कमी लगता है कि यार सीए नहीं करते तो शायद कुछ और कर लेते, या लॉयर फ्रेंड के साथ जब मैं बैठता हूँ, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं मूवीज में काम करना चाहता था या मैं आरजे बनना चाहता था. क्या कुछ तरीका है कि हम लोग जो नॉन वॉइस बैकग्राउंड से हैं, जो हम लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं या लीगल बैकग्राउंड से हैं, क्या हम लोग भी आरजे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं. अगर मैं सीए बन सकती हूँ तो बताइए, क्या कोई ऐसा तरीका है? मैं सैटरडे को फ्री होती हूँ, तो मैं सैटरडे को सीए करना चाहती हूँ. संडे को थोड़े टाइम के लिए आप मुझे इंजीनियर का कोई काम दे दीजिए. मे बी ट्यूसडे सेकेंड हाफ आई कैन बी अ डॉक्टर. ऐसा हो सकता है? काश ऐसा हो सकता होता तो शायद मैं भी सभी प्रोफेशंस कर लेता. करेक्ट. बट करियर शिफ्ट, डू यू थिंक सो वी मीट लॉट ऑफ पीपल, काफी स्ट्रेस लगता है मुझे कभी-कभी कि वो आज जो काम कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते, उनके माइंड में वो पैशन कुछ और करने का था. डू यू थिंक करियर शिफ्ट इज पॉसिबल फ्रॉम फाइनेंस टू रेडियो, और मे बी फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर टू अ रेडियो? इज इट पॉसिबल? एनी टाइम वरुण. देखो, करियर शिफ्ट तो जब जागो तब सवेरा वाली बात है ना. तो आपने पूरी जिंदगी एज अ डॉक्टर बिताई, अब आप 65 इयर्स के ओल्ड हैं और आपको लगता है कि आपको म्यूजिशियन होना चाहिए था. फॉरगेट एवरीथिंग, गेट इनटू म्यूजिक, रीड, स्टडी, डू. लेकिन मैं डॉक्टर भी बनी रहूं और मैं खाली टाइम में म्यूजिक भी कर लूं एज अ हॉबी, इट्स परफेक्टली फाइन. आप अपनी हॉबी को नर्चर करिए, बट अगर आप उसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. बट यू कैन डू दिस शिफ्ट एनी टाइम. लाइक आई टोल्ड यू, डोंट लेट एनीबडी टेल यू दैट यू कैन नॉट डू समथिंग. You can, but you have to follow a certain path. You touched on a very important thing when we talk about age is just a number. 65 years का भी आपने बोला आरजे बन सकता है, but हमें मालूम नहीं है हमें आरजे कैसे बनना है. Let's say if I meet a techie today, or if I meet a doctor today and they want to become an RJ, हमारे पास तो कुछ आइडिया नहीं है अपार्ट फ्रॉम डूइंग सम इंटरनेट सर्च. गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं कुछ, बट कुछ तरीका है कि हमें अगर रेडियो एज अ करियर चूज करना हो और या रेडियो एज अ करियर में शिफ्ट करना हो, मूव करना हो करियर, क्या तरीका है? कैसे, हाउ कैन वी go about that? So Varun, I am running my own training and capacity building institute, and I conduct workshops. मेरे जैसे और भी रेडियो के personalities हैं. So if you join, we will tell you what is in store for you. Also, a lot of us don't know what it means to be a radio jockey. अब मैं आपको बताऊं, behind the scene, in order to be a radio jockey, voice is not important. कि कोई भी रेडियो स्टेशन जो आपको लेगा एज अ रेडियो जॉकी, वॉइस डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज आपकी पीआर स्किल्स कैसी हैं, आपकी स्क्रिप्टिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी टेक्निकल नो हाउ कैसी है, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसा है, आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, आपने पढ़ाई कितनी की है, आपका इमोशनल
quotient कैसा है. So there are different tests. Now these are things which are not in the forefront. But people like us, so I have this outfit called Radio Jockey Handbook, where I'm also doing YouTube videos, which are for basic soft skills training. But this is also to train people to become radio jockeys. You know why? Because आज का जो environment है, social environment, it's the most conducive to be a radio jockey. Because we have something called podcasts. Now everybody is getting into podcasts. We also design podcasts for different people. तो हमने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक ऑनलाइन रेडियो सेटअप किया है. हमने उनका एक पॉडकास्ट बनाया है जिसमें कि 15-15 मिनट के बिट्स एंड पीसेस हैं अबाउट वेरियस इश्यूज रिलेटेड विद योर वोटर कार्ड, कि वोटर कार्ड में नाम नहीं बदल पा रहे हैं तो क्या करें. एंड द पॉडकास्ट की ब्यूटी ये है कि इट्स डाउनलोडेबल. आप जब जहां हो जैसे हो वैसे आप सुन सकते हैं. सो यस, टुडे एनीबडी कैन बी अ रेडियो जॉकी. सो यू मीन टू से कि शायद वो दिन आएगा कि जब पेरेंट्स बोलेंगे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, नहीं मेरा बेटा आरजे बनेगा. आपको लगता है वो दिन आएगा? वो दिन आ भी चुका है मेरे ख्याल से. हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस इन माइंडसेट्स और चाहिए हैं, बट रेडियो इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. And radio is one field. You know, a lot of the times when I talk to students, मैं mass communication में पढ़ाती हूँ जामिया में MA के students को रेडियो. तो पहली क्लास में बच्चे मुझसे हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि मैम रेडियो का क्या रेलेवेंस है? Why are we studying radio today? मतलब टीवी है, OTT है, नेटफ्लिक्स है, रेडियो इन सब में कहाँ है? But thanks to Marconi, 100 years ago he invented radio. Correct. So radio has been able to grow and adapt to the changing scenario. So podcast is the new form of radio. Online radio will be the next new form of FM radio. So कहीं ना कहीं रेडियो हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा बना ही रहेगा. So देखो, so my thought is when you actually watch a TV show, then you have one or two images in front of your eyes. But you actually, when you listen to a radio, then you create your own millions of images using your imagination. तो ये भी एक beauty है रेडियो की. So it actually improves creativity of the listener as well. It does, and you know, coming from you, I'm so impressed because ये बहुत ही प्रोफेशनल वाली बात आपने मुझसे कही है. ये मेरा सेंटेंस था जो आपने मुझसे छीन लिया. पर मैं प्रोफेशनल एंकर नहीं हूँ, मैं आरजे नहीं हूँ, पर मुझे लग रहा है कि शायद मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है. I know, yes, you are doing a great job. Good. Okay. So you mentioned you are running a startup, Radio Jockified. Let's say if I want to become an RJ, I decide for a career move. How do we reach out to you? So I know you personally, but a lot of viewers of this show, how do they reach out to you? Is there a way where we can connect you to them? Or कैसे पता चले कि हमें रेडियो में करियर बनाना है, और आप कैसे हेल्प कर सकते हैं उनकी? Okay, so I have just launched a YouTube channel by my own name, Simran Kohli. That should not be difficult, easy to search. And Radio Jockified is a part of that same channel and quite active on social media. Okay. And so if you just type Simran Kohli, you'll be able to get it. Also, we do one-on-one coaching. So one-on-one coaching का मतलब है we get in touch with corporates and we ask them what are their requirements. Like we conducted a coaching for GAIL. They wanted their employees to be relaxed, peaceful, to engage more with each other in their free time, and they didn't know what to talk about. So they wanted us to, can you imagine कि ऐसा टाइम अब आ गया है कि लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपस में बात क्या करनी है, क्योंकि जब भी फ्री टाइम मिलता है वो सब अपने अपने फोन पे, अपने अपने फेसबुक पे होते हैं. So they wanted us to train them to create conversation triggers. So have you ever heard of a training like that? But we did that and it was hugely successful, and it was a week-long training. So we also reach out to different corporates and we try and train them accordingly. Okay, so corporates are also adapting to the voice modulation or maybe accent neutralization. Yes, podcast. So I was telling you about podcasts. A lot of the corporates are adapting to podcasts. Like we've recently done a podcast for an eye hospital. Which is Aao Acha Dekhen with RJ Guinea. It's a 6-minute podcast, and the purpose of the podcast is to talk about positivity, is to talk about motivation. So yes, corporates are getting on the bandwagon because everybody wants to make a statement saying that we are with you. We know what you're going through. We believe you. How do you make that statement in the social sphere?
Nothing better than a podcast. I do agree. So Simran, let me ask you a couple of questions from your personal life and you as a person. So two things. So one, personal life, and you as a human being. So I have jotted down a few questions for you. Yeah. What is work-life balance? When you hear these words, work-life balance, what comes to your mind? Viva la Vida. Okay, what is that? Viva la Vida is long live life. I don't think there is anything called work and there is anything called life. It's one and the same thing. So if you love your work, you love your life. So do what you love and make it a part of your life. That, according to me, that is also my endeavor, Simran. I have started this show and the name is Life Around Blue, Grey, Black. So we used to wear only blue, grey and black when we go to office, right? So I wanted to probably get more into this. So to hear from, okay, your hiring style. So if you want to hire an employee today, how will you hire? What will you look before you hire a person in your startup? The most important thing for me is the self concept. क्योंकि मेरे पास, अच्छा, बाय द वे, मेरे पास साइकोलॉजी भी रही है. बीए में मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया है. मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वरुण. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंग्लिश, हिंदी. What really matters to me is what does that person think of himself or herself. Because, there's a very thin line in vanity, self-confidence, overconfidence. And that is where I think, because I was reading about the kind of work that you are also doing, and I love the fact that you don't just rest with the results. Like, this initiative of why some people got picked up by CEOs, why they did not get picked up, and you spoke to CEOs. I loved it. Because जहाँ पे सब लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ पे आपके और हमारे जैसे लोगों की सोच शुरू होती है फिर. तो अगर कोई मेरे पास मिलने आ रहा है तो मैं सवाल जवाब से सिर्फ ये जानने की कोशिश करूंगी कि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है. बिकॉज अगर ओवर कॉन्फिडेंट है, आप बाकियों के साथ नहीं काम कर सकते. अंडर कॉन्फिडेंट है, आप कोई भी काम नहीं कर सकते. देयर इज दैट थिन बैलेंस, एंड व्हेन द पर्सन हैज दैट, यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस, बट यू नीड टू बी समबडी हु विल अडैप्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. कभी कभी ऐसा हुआ कि आपके हस्बैंड को किसने बोला हो कि आप आरजे सिमरन कोहली के हस्बैंड हैं? This happened a number of times. So I remember once. ये मैं एक बार की बात आपको बता रही हूँ. So my husband got up. इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा नाम था फिजा खान, सिमरन कोहली बनने से पहले. So a lot of the people know me as Fiza Khan. So when I got married, I was still doing shows as Fiza Khan, but later on I changed my name to Simran Kohli. So my husband one day gets a call and he says, hello. The person says, can I speak to Fiza Khan? So he said, no, she's not around. So the person said, आप कौन बोल रहे हैं? तो हमारे सरदार हस्बैंड बोले, जी मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ. So वहाँ से आवाज आती है, okay, Mr. Khan, can you give her a message for us? So this is one incident which will always be there with me. We've had those kind of incidents. Wonderful. So we are coming to end our show, Simran. But before we leave, I wanted to ask your life around blue, grey, black moment. I just remember one thing which has, ये मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ किसी भी इंटरव्यू में. One of my drawbacks where radio is concerned is that I get too attached with people too soon. तो उसमें जो एक वो न्यूट्रल वाला होता है, जैसे आज भी बहुत सारे लोग मुझसे मिलकर कहते हैं कि आप जर्नलिस्ट क्यों नहीं बन गए, because I'm more into investigative things. But the minute you get involved with people, तो आपके जो listeners हैं या बाकी लोग हैं, तो वो जो एक thin line होती है between official and personal, I seem to cross that a number of times, because of which I've had issues personally, I've had issues officially. तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि हाँ, जब आपने work life balance कहा था, so I think this is what I mean, that you need to maintain that
that difference and that distance. Okay, wonderful, wonderful. So thank you so much, Simran, for your time today, and I wish you a great luck. And all of you have heard Simran today, and many of you watching might be thinking if radio can be taken as a serious career now. But yes, remember, it's not a part-time career, it's a full-time career. Do drop in your comments what you think. If you want to talk to Simran, please reach out to us or reach out to Simran directly. Thank you for watching us. Stay tuned. Thank you so much, Varun. It has been a pleasure. Thanks a lot. Bye-bye.